Hey everyone. Hey guys, how are you doing? Good afternoon guys. Can you guys quickly confirm if you can hear me? Audio. Hi Yatharth. Good afternoon. Hi Nalan. I'm doing great buddy. Thank you so much for asking. Superb Keshav. Alright, this is our second lecture on coordinate geometry. Yesterday we had looked at what the Cartesian system is. We had looked at the distance formula, the section formula, the midpoint formula. Yeah, our aim for today is to go for different points on a triangle, right? We'll be looking at centroid, orthocentre, circumcentre and incenter. Apart from this, we'll also be looking at area of a triangle, area of a quadrilateral, right? This is the aim for today. Are you guys ready? Hi Gaurav. Superb, great Nalan, thank you so much. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer with over 6 years of experience. Please do not forget to follow #CatLiveDaily on Instagram. While you're at it, please get yourselves added to these 2 Telegram groups to keep yourselves updated with everything that we have planned for your MBA prep. These are some of the upcoming and ongoing batches that we have on Unacademy's learning app. If you do not have the app, please go ahead and download it from your Play Store or App Store. You can view, just like on YouTube, you can view free live classes there as well. And you can go ahead and check out the interface before going for the subscription. And if you want to enroll into one of these batches, then all you have to do is take the subscription. You can take the plus subscription by taking any one of these packages, but the best ones are 12 and 24 month ones. You can use this referral code Surana Live to get your 10% discount. You can also opt for Iconic, where you get a personal mentor who would help you at every step of the way. There are 12 months and 24 month packages there. Use referral code Surana Live again to get your 10% discount. That being said, are you guys ready? Say yes if you are ready. Hi Shreyashi, good afternoon. Good afternoon Gaurav. Yatharth, like I said, we had looked at distance formula, section formula, midpoint formula. I think it's better if you go and check that out yourselves than me giving you a brief on it, right? It's just different formulas and how to use it. Yes, but you can attend this now and then go watch that later. Cool. Chalo, so our first part that we are going to look at today would be talking about centroid, incenter, circumcentre and orthocentre. These are 4 different points that lie in and on a triangle that have different properties, right? So we're going to talk about all of these in detail, and I'll also give you formula or standard form in which you can find out these points ka coordinates. Yes, so first let's start talking about a centroid. Can anyone tell me what a centroid is? What is a centroid? Anybody? What is a centroid? So centroid is a meeting point of 3 lines, but what are those 3 lines? Exactly, Gaurav, superb. A centroid is where medians of a triangle intersect. Yes, and what do you mean by a median? A median is a line segment that joins the midpoint of the opposite side to its vertex. Yes, so here in this case, this line is a median. Yes, why? Because it divides this entire line equally, right? 1:1 ratio equally. Yeah, similarly this is a median. Again, this divides this line in the ratio 1:1, equal parts. Yeah, same way this is a median. So 3 medians, when they meet,
they join at a point which is called a centroid. Yes, a centroid is denoted by the letter G. Okay. That is an asteroid. Ayush, that's not a centroid, that's an asteroid. Okay, with that being said, let's go ahead and talk about its properties. So what a centroid does is it divides the median in the ratio 2:1. So if you take this median for example, this point centroid, this point here, the centroid divides this line in what ratio? 2:1. Yes, same way if you consider the other median, let's say this one, this point centroid, it divides your median in the ratio what? 2:1. Yes, two parts near the vertex, one part near the opposite side. Are you able to understand this? If you want more details on centroid, you can go check out our geometry का class. वहाँ पे और detail में समझाया centroid क्या होता है, right? So let's say there are three vertices of a triangle ABC, and their coordinates are x1, y1, x2, y2, and x3, y3. Yes. So since a centroid is where all three medians meet. Yes, all three medians meet. So you're basically going to take the arithmetic mean of all three coordinates. Yes, so for a centroid G, the x coordinate is going to be arithmetic mean of 3 points of the x coordinate, x1, x2, x3. x1, that is x coordinate of one vertex, x coordinate of the other vertex, and x coordinate of the other third vertex. x1, x2, x3 का अगर आप arithmetic mean लोगे, x1 plus x2 plus x3 by 3 will give you the x coordinate of the centroid. Same way for the y coordinate of the centroid, you will take the arithmetic mean of y1, y2, and y3. Yes, y1 plus y2 plus y3 by 3. Are you getting this? It's that simple. Yes, so this is very close to what? Going for the midpoint, correct? How do you find midpoint? You take arithmetic mean of the x coordinates and you take arithmetic mean of the y coordinates, correct? This is midpoint. So this is just an extended version of the midpoint. You just add up another coordinate and divide by 3, add up another coordinate and divide by 3. Understood? Is everyone okay with this? Any doubts here? Shall we move on then? Chalo, तो ये हो गया centroid. Now let's talk about in-center. What is an in-center? Anyone? In-center क्या है? So in-center is basically a point where all internal bisectors of the angles meet, right? Internal angle bisectors meet. Correct, Nalin. Superb. Angle bisectors ka intersection. Beautiful. So if you have a triangle and the opposite angles are bisected, by bisect means what? Divide them in equal parts. This becomes equal to this, right? This becomes equal to this. This becomes equal to this. Divide them in equal parts. The point at which all three of them meet is called in-center. Yeah. And an in-center is also the center of the circle that can be formed that touches all the three sides. Mind you guys, this circle touches all the three sides. Look at this. Ye raha ek side, here's a side, and the circle touches it here, right? Tangential hote hain ye sab. Samajh rahe ho? These become tangential. Yes. So when they become tangential, that basically means this becomes the radius and this becomes perpendicular automatically. Yes, by the rule of tangent and radius. Tangent and radius are perpendicular at the point of contact, है ना? So they become perpendicular, right? So in center I can be formed. The coordinates of the in center can be found by taking the coordinate x1 multiplying with the opposite side. So A के opposite side का length है A. Vertex B के opposite side का length है B. Vertex C के opposite side का length है C. So basically dividing them, you're basically dividing them in the ratio A is to B is to C. I hope you are understanding this.
So x1 into a, x2 into b, x3 into c, opposite vertex से multiply करके फिर you divide in that ratio a plus b plus c. Yes, same way for the y coordinate, y1 into a, y2 into b, y3 into c by a plus b plus c. Yes, hi Shubham, good evening. Understood? A B C क्या है? Opposite sides, length of the sides opposite to that particular vertex. A के opposite का A है. Say yes if you've understood this. ये अगर समझ में आ गया तो yes बोलो. Superb. So with an in-center क्या है? The angle bisector divides the opposite sides in the ratio of the sides included in that angle. For example, BD by DC. Yes, here if you look at BD by DC, ये जो opposite side है, opposite side, इसका ratio क्या होता है? It is angle C by B. Yes, side C by B. समझ रहे हो? साइड C by B, ये एंगल है, ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, तो इसका जो रेशियो है इट विल बी द सेम एज C is to B. Yes, you can use concept of BPT, basic proportionality theorem. Yes, basic proportionality theorem के हिसाब से क्या, this is small c, हाँ, small c. तो BD by DC is the same as AB by AC, which is nothing but C by B. Same way, if you want to take this, let me erase all this. अगर आपको इसका रेशियो चाहिए, if you want the ratio of the this part, let's say AF by FB, right? AF by FB, इसका रेशियो क्या होगा? ये है, this is the included angle. Correct? Sorry, not AF by FB. Yeah. Yes. So AF by FB, that's going to be what? AF by FB. Included angle क्या है? Opposite angle क्या है? C है. Right? So AF by FB, ये रहा, उसका opposite angle is this. Included sides क्या होंगे? This and this, which is AC by BC. Ratio, they'll be proportional. Yes, yeah, you can also go by the angle bisector theorem. Yes, AF by FB is AC by BC. Yes, same way if you go for AE by EC, AE by EC, AE by EC का रेशियो क्या रहेगा? ऑपोजिट एंगल क्या है? B, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? AB by BC. Understood? Yes. So that's the first point. The second point is in-center divides the angle bisectors AD, BE and CF in the ratio of this. B plus C is to A. Yes, so AD is what? इस angle का bisector. Yes, तो ये this side is A, this side is C, this side is B, correct? तो इसका जो ratio है, this ratio, this part would be B plus C and this part would be A. समझ रहे हो? Right? Closer to the vertex will be sum of opposite sides. जैसे C का क्या होगा? A plus B, और this part, इसका रेशियो क्या होगा? C. Are you understanding? Same way, this part will be B, this part will be A plus C. Yes. रवि, थोड़ा सा इश्यू रहेगा आपको, क्योंकि आपको फिर यू डोंट नो द प्रॉपर प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर वगैरह, तो अगर वो आपको ठीक है तो देख लो अभी, वरना फिर आगे जाके आप बाद में देख सकते हो. नो इश्यूज. डन. So these are just some extra properties that might help you answer the question a little faster. Yes. Now let's move to circumcenter. What is a circumcenter? Circumcenter is an intersection of what points? Perpendicular bisectors.
Yes, perpendicular bisectors. That is the line that a line that acts both as a median and a perpendicular line. Yes, median and altitude. Those are called perpendicular bisectors. मतलब they will divide the opposite. पीयूष क्या बोल रहे हो आप? मीडियन एंड एल्टीट्यूड का कॉम्बिनेशन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मतलब वो ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर भी रहेगा और वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करेगा. फॉर एग्जांपल हियर this line divides this in equal parts and is also perpendicular to it. Yes, this line divides this in equal parts and is also perpendicular it. Same way, equal parts and perpendicular, है ना. तो a line that is a median as well as an altitude is called a perpendicular bisector, and when they all coincide, when they all meet, they form a point that's called circumcenter. A circumcenter is also the center of what? Circumcenter is also the center of a circle that can be drawn by joining all the vertices. Yes, सारे vertices को join करके. Correct, all the vertices को join करके जो circle बनता है उसको हम circumcenter, circumcircle बोलते हैं. The circle is called circumcircle because it circumscribes the triangle. Yes, यहाँ पे इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. इन सर्कल का क्या था? इन सर्कल इट इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल. गॉट इट? यस. सो इफ O is the center, if we say O is the center, then you know that OA square, this part OA square will be the same as OB square, will be the same as OC square. Yes, OA square क्या हो जाता है? बेसिकली your OA ultimately becomes what? The radius, है ना. ये क्या हो गया? रेडियस. यहाँ पे भी ये क्या हो गया? रेडियस. यहाँ पे भी ये क्या हो गया? रेडियस, है ना. तो रेडियस इक्वल होते हैं एक सर्कल के. यस, सो OA स्क्वायर नहीं भी लगाते हो तो भी द सेम थिंग, डजंट मैटर. कूल. सर्कमसेंटर समझ में आया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट इट्स coordinate. It is a little complex, will include a little bit of trigonometry, तो ध्यान से सुनो. Okay, so first things first, if it is a right angle triangle. Yes, अगर ये right angle triangle है, if this is a right angle triangle, then the circumcenter won't lie here, it will lie here. ये आपका circumcenter होगा. इस center से आप circle draw करोगे. Got it? Yes, this becomes the circumcenter. So if this is your right angle triangle, yes, then the circumcenter will lie on the midpoint of the hypotenuse here. Yes, so the circle will be drawn like this. It will touch all the three vertices and this becomes the radius. Yes, this is the radius which is also half of the hypotenuse. Yes, radius in a right angle triangle, circumradius is what? Half of the hypotenuse. Yes. और अगर आपको if you want the vertices or you want the coordinates of the circumcenter, then you're going to have to use a little bit of trigonometry. It would be this x1 जो कि, so if this is your triangle, then point A is x1 comma y1, point B is x2 comma y2, point C is x3 comma y3. So if you want the क्या बोलते हैं circumcenter का coordinate, then all you have to do is what? Go x1 times sine 2 times A, right? Opposite side है sine 2 times A, opposite by hypotenuse, है ना. तो sine 2 times A plus x2 into sine 2 times B plus x3 into sine 2 times C. Yes, divided by sine 2A plus sine 2B plus sine 2C. What do you mean by sine? For example, sine A is going to be how much? Sine A क्या होगा? Opposite by hypotenuse.
yes, opposite by hypotenuse. So if you draw a perpendicular here, क्योंकि perpendicular bisectors meet होने पे होता है, तो perpendicular bisector का क्या हो जाएगा, this becomes your hypotenuse, AB becomes the hypotenuse, AB is hypotenuse. You want to find out at what point does this stand and at what point does this stand, है ना, तो that is why you are taking the sine of it. Yes, opposite by hypotenuse, इसीलिए आप sin ले रहे हो. So sin 2a, sin 2b and sin 2c, this you have to be very much careful about. ठीक है. Same way y coordinate का भी. So the ratio in which these are divided, these coordinates are divided, are what? Sin 2a is to sin 2b is to sin 2c. Cool. Same thing for the y coordinate also. y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. For general angles you can find out the sine value, but अगर weird angles देते हैं, let's say the angle is say 12 degrees, yes, 18 degrees, something like that, in that case they'll give you the value, you don't have to remember that. Yes, तो ये देखो, note different signs for different angles. Sin 30 is 1 by 2, you all know that. Sin 45 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2 and sin 90 is 1. Yes, अगर आपको equilateral triangle दिया है तो sin 120 is the same as sin 60 root 3 by 2. ठीक है. Yes, something that you might need for some problems. Now let's go to orthocentre. Orthocentre is where all the altitudes meet. सारे altitudes का joining point is called orthocentre. Yes. So if this is the triangle given to you, if this is the triangle with coordinates x1 y1 x2 y2 and x3 y3, so from this point if I draw a perpendicular line to the opposite side, ये perpendicular है, bisector नहीं है. Yes, अगर ये bisect भी करता है तो orthocentre is the same as circumcentre also, perpendicular bisector. Yes, तो orthocentre का क्या सीन है? They are perpendicular to the opposite side, need not divide them in equal parts. Yes, अगर equal parts में कर रहा है तो that line also becomes perpendicular bisector. Yeah, so these are perpendicular in these three places. The point at which all three of them meet is called orthocentre. यहाँ पे भी इसका coordinate निकालने के लिए you're gonna have to use trigonometry. This time you will be using tan. Yes, x1 tan A plus x2 x1 नहीं है, x2 tan B plus x3 tan C divided by tan A plus tan B plus tan C. A, B, C are the angles of that particular vertex. Same way y1 tan A, y2 tan B, y3 tan C by tan A tan B tan C. ठीक है. Now if the triangle is a right angle triangle, then the orthocentre is the vertex where the angle is formed. तो orthocentre कहाँ पे form होता है? Orthocentre for a right angle triangle, this becomes your orthocentre. क्योंकि अगर यहाँ पे 90 है तो here is the orthocentre. क्योंकि this part becomes one quadrant, ये पूरा एक quadrant हो जाता है, right? This is one quadrant, so this is where your orthocentre lies. समझ गए? Cool guys, say yes if you understood this. चलो, let's move on. Now with again tan के different values. Tan you can find out if you know that tan of any value, tan, let's say theta is nothing but sin theta by cos theta, correct? So if you remember sin and cos values, you can find out tan, or if you remember sin and tan values, you can find out cos also. So tan 30 is 1 by root 3. Tan 45 is 1 by root 2 by 1 by root 2, which is 1. Tan 60 is root 3 by 2 by 1 by 2, which is root 3. And tan 90 is 1 by 0, which is not defined. Yes, tan 90 is something that is not defined. Understood? Yes. And if the given triangle is an equilateral triangle,
सबसे बेस्ट ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके हिसाब से फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मीडियन, द लाइन एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर सब सेम है. All these lines are the same for an equilateral triangle. Median, altitude, perpendicular bisector, angle bisector सब सेम है. मतलब इनके इंटरसेक्शन के पॉइंट्स भी सेम ही रहेंगे, राइट. सो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर सारे कोइंसाइड करेंगे. 1 point for all 4. डन. यस. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में वापस सेम रेशियो हो जाएगा 2:1 का, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे सेम हैं. तो सेंट्रॉइड जो काम करेगा वही ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर और इन सेंटर भी करेगा, है ना, 2:1 के रेशियो में. एंड लिसन टू दिस, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर एंड सर्कमसेंटर लाई ऑन द सेम लाइन. नॉट, दे आर नॉट द सेम पॉइंट्स बट दे लाई ऑन द सेम लाइन. कौन से लाइन पे? If this is your isosceles triangle, ये आपका isosceles triangle है, ये दो sides equal है, ये अलग है. isosceles triangle में दो points, दो sides equal होते हैं, third वाला unequal, right? So here this is where the perpendicular bisector, the angle bisector and the median सारे same ही रहेंगे यहाँ पे. Yes. तो ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे ही तीनों पॉइंट लाई करेंगे. दे मे नॉट बी द सेम, राइट, दे विल नॉट बी द सेम. आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारे पॉइंट सेम नहीं होंगे. ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इन सेंटर सब अलग अलग होंगे, बट दे विल लाई ऑन दिस लाइन ओनली, ऑल 4 पॉइंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. नो, point 3 is for equilateral triangle. This is only for equilateral triangle. ठीक है. या करेक्ट गौरव, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट, दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. डन. तो अब तक ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वी हैव स्पोकन? शैल वी मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस नाउ? थोड़े क्वेश्चंस करेंगे अभी. चलो, लेट्स गो ट्राई सम क्वेश्चंस आउट. हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. We need to find the in center of these vertices. Go ahead, try this out. रवि आपको कैट में इंग्लिश में ही आएगा ना, कैट में हिंदी में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आदत डाल लो, राइट. अभी के लिए मैं बता दूंगा. यू हैव टू फाइंड द इन सेंटर. किसी गिवन ट्रायंगल का इन सेंटर निकालना है जिसके वर्टिसेस, राइट, ए, बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. सो इफ दिस इज योर ट्रायंगल, then they've given the vertices. A का कोऑर्डिनेट दिया है -36,7, B का कोऑर्डिनेट दिया है 20,7, C का कोऑर्डिनेट दिया है 0,-8. इसमें हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द इन सेंटर.
यस, इन सेंटर आई का फॉर्मूला क्या है कोऑर्डिनेट का? ऑपोजिट साइड, राइट? ऑपोजिट साइड को यहाँ पे इसको ए बुलाएंगे, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, करेक्ट? तो क्या है x1a प्लस x2b प्लस x3b x3c डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, दैट इज नथिंग बट द पेरीमीटर. a प्लस b प्लस c क्या है? पेरीमीटर. और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम, y1a प्लस y2b प्लस y3c बाय a प्लस b प्लस c, है ना? तो अभी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सिर्फ डिस्टेंसेस नहीं दिए हैं. ओनली द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू, डिस्टेंसेस आर नॉट गिवन टू यू. सो यू गोना हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड आउट द डिस्टेंसेस बिटवीन देम एंड देन यूज दैट फॉर फाइंडिंग आउट द इन सेंटर. Any answers yet? Guys, if you haven't hit like on this video already, कर देना. राइट रवि, एनी टाइम. बताओ आंसर अभी. पहले जो है साइड्स आइडेंटिफाई करो. A इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स BC, इसका निकालो. B इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स AC, फाइंड दैट आउट. C इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B. How do you find out the distance between them? If you want to find BC, then what do you do? 20 minus 0 the whole square plus 7 minus of minus 8, that is 7 plus 8 the whole square का under root, correct? इसको आप ऐसे ही कर सकते हो. दिस इज 20 स्क्वायर, दिस इज 15 स्क्वायर, सो द नेक्स्ट थिंग विल बी व्हाट? 20 15 एंड 20 15 एंड द नेक्स्ट वन विल बी व्हाट? 25. सुपर्ब. जो क्या है? 3:4:5, राइट? पिथागोरियन ट्रिपलेट्स है 3 4 5. यस, सो यू गेट 25 हियर. तो आपको A का लेंथ मिल चुका है 25 यूनिट्स. Similarly, find B का length. What is the length of B? B is this. So 0 and 36 के बीच का difference, go minus 36 minus 0 is 36 square plus minus 8 minus 17 is minus 15, that is 15 square का under root. Yes, which is how much? AC is 39, correct? Yes, and C के लिए which is AB, 20 minus of minus 36 is 56 square plus 7 minus 7 0, है ना? तो ये 0 क्या? 0 square का under root. This is what? 56. तो now you've gotten तीनों sides A, B और C मिल गए आपको. अब directly just plug into that formula. That's it. Yeah. So what is I? x1, what is x1? इसको x1 ले रहे अपन, राइट? x1 y1, x2 y2, x3 y3. नॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहीं पे इश्यूज होते हैं. ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहीं पे इश्यूज होते हैं. पॉइंट्स की अदला बदली कर देते हो, राइट? डोंट डू दैट, प्लीज बी वेरी केयरफुल. सो minus 36 इंटू A क्या है? 25 प्लस x2 क्या है? 20 into what is B? 39 plus x3 is what? 0 into 56 divided by तीनों का sum, perimeter. 25 64
64 120, correct? This is x coordinate. Understood guys? आपका 38 आ रहा है, 36 square and 15 square. 36 square is 1296, 15 square is 225, which is 1521. 38 अगर 38 square अगर होता तो it would end with 4 not 1. ठीक है? I hope you are understanding. This ends with 6, this ends with 5, 6 plus 5 1 से end होगा, 38 square 4 से end होगा. चेक कर लो कैलकुलेशन एक बार. Yeah, same way for the y coordinate. Go ahead and try it out for the y coordinate. Y coordinate का क्या हो जाएगा? 7 into 25 plus 7 into 39 plus minus 8 into 56 divided by 120 again. Yes. Once you figure this out, once you find out the sum, यहाँ पे क्या हो जाएगा? minus 36 into 25. Yes, so you do the calculation, you will get minus 1 comma 0. This is your coordinate of in center. Got it? Everyone? So if you do get a question like this, you know it's going to take some time, है ना? Time consuming definitely है, but you will get the answer whatsoever. Cool? Any doubts here? Anyone? अगर ये equilateral triangle होता, if this would have been equilateral triangle, तो अपने को इतना लंबा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. If this were an equilateral triangle, तो इन सेंटर और सेंट्रॉइड सेम ही होता, तो डायरेक्टली सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं. सेंट्रॉइड निकालने के लिए 30 सेकेंड्स, है ना? डन. शैल वी मूव अहेड? चलो, ट्राई दिस आउट. Here they've given the vertices, नहीं, here they've given the midpoints of the sides of a triangle. Midpoints दे रखे हैं. Quickly try this out. Here also we have to find out the in center. Hi Milan. तो आपको डबल अप करना पड़ेगा थोड़ा सा मिलन. Watch the recording. See when you find time. पैरेलली ख़त्म करो वरना लेफ्ट ओवर अगर हो गया तो मुश्किल हो जाएगा मिलन. Alright Ravi, thank you. Nalin, yours also is a little back. वैसे अपन ने ज्योमेट्री यूट्यूब पे जो कवर किया था, that you finished, right? जो ज्योमेट्री अपन ने यूट्यूब पे कवर किया था वो तो आपको आ गया ना? That basically means आप basics you can skip. Basics को आप skip करके you can go try out the questions. या basics को आप try it at a faster pace. हाँ, तो मिलन बस थोड़ा सा पेस बढ़ा के वो कर लो. कौन से लेक्चर्स कोइंसाइड हो रहे हैं नलिन? Okay, so you have a triangle, yeah, and they've given us the midpoints of it. Yes, midpoint of this
सॉरी midpoint 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 है ना. So we can call this 0, 1, 1, 1, and this will be 1, 0. You can try this using graph also actually. एक ग्राफ बना के भी कर सकते हो, it'll make more sense to you. तो अगर ये आपका ग्राफ है, yes, तो your 0, 1 will lie somewhere here. 0, 1 is here, 1, 0 is here, and 1, 1 is here. These are actually the midpoints of the sides. Yes, midpoints. Anyway, so with this being drawn, yes, अब हमें to find in center what do we need? In center ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए? Either go for the point of intersection जहाँ पे ये लाइन और ये लाइन coincide हो, right? Finding that out becomes very difficult, है ना. आपको इस लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तीनों लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, which is a tough task. So instead what do? You go for the sides. Yes, तो अगर ये A है, इसका x1 y1 है, this is B, x2 y2, this is C, x3 y3. So what do you know? x1 plus x2 by 2 is 0. Agreed? x1 plus x2 by 2 is 0. Midpoint ना, midpoint formula लगा रहा हूँ, arithmetic mean, x1 plus x2 by 2 is 0. So what do you get from this? You get x1 plus x2 is equal to 0. Yes. Same way y1 और y2 का क्या निकलता है? y1 and y2, y1 plus y2 will come up to be 2, है ना. y1 plus y2 by 2 is 1, so y1 plus y2 is 2. समझ रहे हो ये? Yes. Same way x2 plus x3, x2 plus x3 is equal to 2, y2 plus y3, y2 plus y3 is equal to 0. Yes. x1 plus x3, x1 and x3 is equal to 2, y1 plus y3, y1 plus y3 is also equal to 2. Yes, तो यहाँ पे either you can sit and solve these equations. आप या तो ये 6 equation जो बने हैं, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे solve करो, find out what x2 is. You can use this. Yes, इन दोनों को use करो, subtract them, you will get x2 minus x3 minus 2. x3 minus x2 is 2, x2 plus x3 is 2. दोनों को use करो to find out the coordinates. Yes, ultimately what you will get x1 and y1 is basically 0, 0. Yes, x2 and y2 will become 0, 2, and x3 and y3 will be 2, 0. Agreed? Yes or no? समझ रहे हो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, this is 0, 0. This will become, तो ये points एकदम precise नहीं है. If you put it on a graph, they are not very precise. But if you do put it on a graph and draw the lines properly, then you will get it, है ना. But ये graph से करना पड़ेगा, which will be little too complex. So you found out their coordinates. Now you need their sides. A के opposite is A. I know this is long, it's a little lengthy, but that's what you have to do to answer this, है ना. तो A के opposite का A है, which is distance between 0, 2 and 2, 2. Yes, 0, 2 and 2, 2, which is going to be what? 2 square plus 2 square, है ना. So A is going to be what? Let me use another pen. Distance A, which is BC, that's nothing but 2 minus 0 the whole square and 0 minus 2 the whole square. That is root of 2 square plus 2 square, which is root 8, 2 root 2. Correct?
What will be b? That is nothing but this. This is b. How will you find out b? x1 and x3. x1, x3 becomes simple. 2 square, sorry, ac, है ना? That is basically 2 square plus 0 square का root. This is 2. Yes, and c क्या है? ab. This is c. That is ab. a and b का भी 2 हो गया. Yes, ab is also 0 square plus 2 square का root, which is 2. Done. Now what do you use? In center का formula and get it over with. Yes, in center क्या होगा? a into x1 which is 0 plus b into x2 which is 0 plus c into x3 which is 4 divided by 4 plus 2 root 2. Correct? Comma, what will be y coordinate? Again 0 into 2 root 2, 0. 2 into 2, 4. 0 into 2, 0. By same 4 plus 2 root 2. I hope you guys are able to understand this. This is 4 by 4 plus 2 root 2, comma 4 by 4 plus 2 root 2. Yes, if you want to rationalize this, rationalize कर सकते हो इसको, कोई problem नहीं है ना? You can rationalize this if you want. 4 plus 2 root 2, 4, 2 common ले लो, 2 cancel out हो जाएगा. So this will become 2 by 2 plus root 2. Here also 2 by 2 plus root 2. Yes, which if you rationalize this, multiply and divide by 2 minus root 2, what will you get? You will get 2 minus root 2 comma 2 minus root 2. Understood? So your in center for this particular given triangle is what? 2 minus root 2 comma 2 minus root 2. Done? Guys, I hope you understood this. Yes. Done, Shubham. Shall we move on? Next question. लॉन्ग है, लेंथी है, रेयर है क्वेश्चंस. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं क्वेश्चंस, रेयर होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस और भी रेयर होते हैं. सो चलो लास्ट वन फ्रॉम दिस, देन विल मूव टू एरिया वाला पार्ट. जल्दी से करो. They've given the 2 vertices of the triangle और उसका सेंट्रॉइड दे दिया है. थर्ड वर्टेक्स ढूंढना है. वेरी सिंपल. दिस इज एक ट्रायंगल है whose 2 vertices are given. Let's say a और b दे दिया, 6, 3 and -1, 7. You need to find x. You need to find x, y, which is coordinate of the vertex c. What have they given to us? They've given us the centroid. What is centroid? Midpoints के intersection. Yes, medians का intersection. They've given centroid g, है ना? g का coordinate क्या दिया आपने को? 1, 5. Got it? Quickly find out. 0, -5. Beautiful. Very nice. This is 1, 5. You can directly do it by the formula. Centroid G is given by what? x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3 by 3, which is given as 1, 5. तो x1 plus x2 plus x3 is going to be what? x1 जो कि क्या है? 6 plus -1 plus x by 3 is going to be equal to 1. Agreed?
yes, so what is this? You get 5 plus x is going to be equal to 3, or x is going to be equal to minus 2. Agreed everyone? Yes, no? Same way for y क्या होगा? y1 which is 3 plus 7 plus y by 3 should be equal to 5, or y should be equal to 15 minus 10, 5. So what is the coordinate of your centroid? क्योंकि यहाँ पे centroid है, it's easy. Coordinate of the centroid is what? -2, 5. Yes, है ना? यही अगर if they had asked for let's say circumcentre, incenter, तब वाट लगती, right? Circumcentre तो मुश्किल है निकालना because angle is not known to us. तो circumcentre and orthocentre would become very difficult, but incenter अगर पूछ लेते तो बैंड बज जाती है यहाँ पे. Done? Shall we move on? Now let's move to the area part. So far everything that we've discussed with respect to points clear है ना? All 4 points: centroid, incenter, circumcenter and orthocentre. Check है? Beautiful. Now let's go to area. First we talk about area of a triangle, right? We know that area of any given triangle is what? Area of any given triangle is half times base times the perpendicular height. Yes. So you either use this, or what do you use? You use Heron's formula, correct? According to Heron's formula, what is area of a given triangle? First you find out the semi-perimeter, which is sum of all the 3 sides by 2, half of the perimeter, right? Then what is the area? Semi-perimeter into difference between semi-perimeter and each side का root. Yes, but is there a third way of doing this? Is there a third way? तो 2 तरीके तो है, right? We have 1 and 2. If we can find out these distances and do it, then there's nothing like it. But is there a third way of doing it? Of course. Yes. So if x1 y1, x2 y2, x3 y3 are the 3 vertices of the given triangle, then area is given as what? Half into x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. Are you getting this? x1 times y2 minus y3, x2 times y3 minus y1, okay, not y1 minus y3, y3 minus y1, and x3 times y1 minus y2. Done? Since this is a physical quantity, क्योंकि ये physical quantity है, you take the entire thing का modulus, not individual modulus. Mind it guys. Here y3 minus y1 won't be equal to y1 minus y3. Please mind this. ठीक है? क्योंकि individual terms का modulus नहीं ले रहे हैं, इसका modulus ऐसे नहीं ले रहे हैं, अपन पूरे चीज का modulus ले रहे हैं. Why are we taking modulus though? Because area is a physical quantity, right? Area has to be greater than equal to 0. Agreed? Yes. Now special cases, अगर कोई भी एक vertex, any given vertex, if it lies on the origin, let's say if your triangle is something like this, ये आपका ग्राफ है, if your triangle is something like this, one of the vertices here, ऐसा अगर आपका triangle है, yes, then you know the coordinate of this, you don't have to consider this. This is 0, 0, this will become x1 y1, this will become x2 y2. Yes, so it's basically half times x1 y2 minus x2 y1. Yes, क्योंकि बाकी क्या, बाकी if I consider this x3 y3, x3 भी 0 है, y3 भी 0. ठीक है, you can directly substitute 0 there or go ahead with this. Done?
Any doubts here? Anybody? So this is x1 y1 into x2 y2. This is x1 y2 into x2 y1. Yes. And the second point is what? When the vertices are on x-axis, if two vertices lie on the x-axis, yes, मतलब y coordinate 0 है ना, and third vertex is h comma k, then its area becomes 1/2 into a minus b into k. Yes, that is if your triangle is something like this, x-axis पे अगर वो lie कर रहा है and two vertices are on the x-axis, ये आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, रिमेंबर, ये अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाओ, राइट. सो दिस विल बी व्हाट, लेट्स से a कमा 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे, a कमा 0, b कमा 0, एंड इफ आई से दिस इज h कमा k, तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ टाइम्स a माइनस b इंटू के. यस, बिकॉज द अदर टू प्लेसेस में y कोऑर्डिनेट 0 है. यस, तो इसको अलग से डोंट रिमेंबर दिस और दिस, अलग से डोंट हैव टू, कंफ्यूज ही हो जाओगे. टेक द वर्टिसेस एज 0,0 और a,0 और b,0 एंड देन डू इट. ठीक है. क्वाड्रिलैटरल के लिए मिलन, ये ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रिलैटरल के लिए सिमिलर फॉर्मूला है. फॉर अ क्वाड्रिलैटरल यू हैव अ सिमिलर फॉर्मूला. ठीक है, चलेंगे आगे. नाउ अच्छा, दिस अगेन यू कैन यूज कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं, राइट. टू प्रूव कोलिनियरिटी there are two ways. One, you either go for this, AB plus BC is equal to AC, sum of any two sides if it's equal to the third side, तो वो तीनों points collinear है, lying on the same point, correct. So if I say this is A, B and C, AB plus BC, if it is equal to AC, then what do you get? That they are collinear. This is one way. The other way to go for it would be what? Going for the area of the triangle. So if you consider A, B and C as vertices of a triangle, then the area of this given triangle ABC will always be equal to 0. क्यों 0? क्योंकि ये triangle ही नहीं बनेगा, राइट. इन तीन पॉइंट्स को रख के अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहोगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, मतलब इसका एरिया क्या होगा, 0. गॉट इट. कोलिनियरिटी प्रूफ करने के दो तरीके. दिस वी सॉ येस्टरडे, दिस इज व्हाट द न्यू वन दैट वी आर सीइंग टुडे. डन. यस, ये अपन ने देख लिया था कल. दिस वी हैड लुक्ड एट इट, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स. ठीक है. You can also use this actually, y2 minus y1 by x2 minus x1. स्लोप कोलिनियर अगर है तो स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे. स्लोप्स के बारे में आगे और बात करेंगे, तब इसको वापस खींचेंगे. ठीक है. Now let's talk about area of a quadrilateral. So we've seen triangle जहाँ पे 3 sides है, 3 vertices है. Yes. Now let's take a quadrilateral where there are 4 vertices, A, B, C and D. Yes. x1 y1, x2 y2, x3 y3 and x4 y4. सिमिलर फॉर्मूला है, सिमिलर फॉर्मूला, half of x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y4 minus x4 y3 plus x4 y1 minus x1 y4. ग्रुप्स बना रहे हो, यहाँ पे x1 और y1 का ग्रुप है, यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट. कैसे होगा इसका? ऐसे, x1 y1 x2 y2, है ना. तो व्हाट डू यू डू हियर? यू क्रॉस मल्टीप्लाई देम. x1 y2 माइनस x2 y1. यस, यहाँ पे क्या दो ग्रुप्स बनेंगे? x2 y2 एंड x3 y3 का. x3 y3, दिस इज योर सेकेंड ग्रुप. ऐसे x2 y3 माइनस x3 y2. यस, सेम वे x4
x4 y4, तो सेम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यस x3 y4 x4 y3, एंड देन फॉर द फर्स्ट लाइन अ लॉट ऑफ पीपल मिस इट आउट, भूल जाते हैं इसको, तो इसको वापस लिख लो x1 y1, तो फिर वापस क्या करोगे x4 y1 x1 y4, यस दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। ठीक है मिलन, तो कल जो क्वेश्चन आया था एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल के लिए, यू कुड हैव यूज्ड दिस। एनी डाउट्स हियर? द सेम यू कैन डू फॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑल्सो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पे भी आप ये कर सकते हो, ओनली थिंग इज यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द एक्स पार्ट, यस x1 कॉमन रहेगा, देन यू डू y2 माइनस y3, समझ रहे हो, नॉट मॉडुलस मल्टीप्लाइड, यस प्लस सेम x2 कॉमन रहेगा, गो फॉर y3 माइनस y1, x3 कॉमन रहेगा, गो फॉर y1 माइनस y2। ठीक है चलो डन ना, क्वाड्रिलैटरल का कोई कंफ्यूजन? ट्राई दिस क्वेश्चन आउट ना। लाइन दिया है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड डोंट वरी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी गिवन स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यस सो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी। There will be two possible solutions, ठीक है, ध्यान से करो, there will be two possible solutions. So draw the diagram first. ये आपका ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको दे दिया है, they've given the area of this as 5. Yes, if I consider this point A as 2,1, point B as 3, -2, पॉइंट C नहीं है, उसको x, y ले लो, यस थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 3, या तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, राइट दिस एज -x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन। यस तो पहले ट्राई एंड फाइंड आउट एन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यस इसको यूज करो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को रख के फाइंड आउट एन इक्वेशन, या सो लेट्स डू दिस। एरिया ऑफ एनी गिवन ट्रायंगल इज व्हाट, हाफ टाइम्स x1 into y2 minus y3 plus x2 into y1 minus y2, y3 minus y1 plus x3 into y2 minus y1, correct? Minus 4.5 and minus 1.5 क्या? नहीं नलिनी एक बार वापस चेक करो। Sorry, this is y1 minus y2.
सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे. सो व्हाट विल हैपन, 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1, ये ले लो, x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, जिसको हम x और y लिखेंगे, राइट. सो x1 दैट इज 2 times y2 -2 minus y plus x2 which is 3 times y3 जो नहीं पता y minus y1 that is 1 plus x3 that we don't know, let's call it x, y1 minus y2 which is 1 minus of -2, that's 1 plus 2. ठीक है, इसका मॉड्यूलस है, हाँ, you have to keep that in mind, इसका मॉड्यूलस है. So this gives us what, 10 is equal to 10 would be equal to what, -4 minus 2y plus 3y minus 3 plus x plus 2x. Yes, so ultimately what do you get? You get 10 is equal to 3x plus y minus 7. Agreed? तो ये टू इक्वेशंस ना. पहला इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि मॉड्यूलस में है ये ध्यान में रखना है आपको, ऑल दिस इज इन मॉड्यूलस. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इट कुड ईदर बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव, है ना. दिस इज एंटायर थिंग इन मॉड्यूलस. सो इफ इट इज पॉजिटिव देन व्हाट विल हैपन, 3x plus y minus 7 will be equal to 10, giving us what, 3x plus y is 17. If it is negative फिर क्या हो जाएगा, 3x y plus y minus 7 is minus 10. मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ओपन कर रहे हैं इसलिए. So what will you get, 3x plus 5 is equal to -3. Yes, both of these should be satisfying, इसीलिए दो वैल्यूज आएंगे, समझ रहे हो. Why would you get two values for the third vertex, क्योंकि मॉड्यूलस है. यस, मॉड्यूलस है इसलिए दो वैल्यूज आएंगे. कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इक्वेशन उस हिसाब से बनेगा. मिलन, किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले सकते हो, इक्वेशन उस हिसाब से बनेगा, सोल्यूशन उस हिसाब से ही आएगा, बट सेम ही आएगा. इट डजंट मैटर, ठीक है ना. बाकी सारे वैल्यूज जो है वो करस्पॉन्डिंग हो जाता है, तो इट डजंट मैटर. अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ है, वी बीन गिवन दैट आर थर्ड वर्टेक्स x, y जो है थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन -x plus y is equal to 3. चलो इसको ऐसे लिखते हैं, -x plus y equal to 3, इसी फॉर्म में. यस, मतलब अपने जो इक्वेशंस है वो इसमें सेटिस्फाई करने चाहिए, अपने जो x और y के वैल्यूज हैं वो इसमें सेटिस्फाई करने चाहिए, करेक्ट. यस, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज व्हाट, y शुड बी इक्वल टू 3 plus x, या जो पहले दिया था, y इक्वल टू x plus 3, वॉट एवर. अंडरस्टूड. Yes guys, तो अभी अपने को क्या करना है, now we have to solve these equations, right? We have to solve these equations to find the value of x and y. तो पहले पॉजिटिव के साथ करो, फिर नेगेटिव के साथ करो, right? First try it out with positive, then try it out with negative. Yes, डायरेक्ट सोल्यूशन करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन कर सकते हो यहाँ पे, if you subtract these two values. So take this as equation 1, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, अब इन्हें बैठ के सॉल्व करो. Yes, so solving 1 and 2. 1 and 2 को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, I'll get -x plus y is equal to 3 and 3x plus y is equal to 17. If I subtract both of these, I'll get 4x is 20. Am I right? No, 4x is 14. So you get x equal to 7/2
y का क्या हो जाएगा? इफ x is 7/2, if this is 7/2 which is 3.5, if it goes there it becomes 6.5 which is 13/2. This is one coordinate. Now solve 1 and 3. फिर आपको दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा. दो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस है. एरिया निकालना है. बेसिकली द साइड कुड बी ऑफ एनी वैल्यू, है ना. तो अगेन what do I do? If I subtract both of these, I'll get 4x is equal to -3 which is -6, or x is equal to -6/4 which is -3/2. तो y क्या हो जाएगा? If x is -1.5, -1.5 उधर गया, +1.5, 4.5 which is 9/2. नहीं हाँ, माइनस ऑफ -1.5 ना, तो 3/2 हो जाएगा, 1.5. तो अपने क्या हो गए? दो वर्टिसेस, पॉसिबल वर्टिसेस, राइट. पॉसिबल वर्टिसेस विल बी व्हाट? पॉइंट C, थर्ड वर्टेक्स, दैट इज x, y could either be 7/2, 13/2, or it could also be -3/2, 3/2. बुझे? अंडरस्टूड एवरीवन? लंबा है, आई गेट इट, बट सुपर्ब. सो श्रेयसी गॉट इट ऑलमोस्ट राइट. वेरी गुड. मिलन, आप एक बार ही चेक कर लेना. यस, क्योंकि मॉडुलस है इसलिए दो वर्टिसेस आ रहे हैं, अदरवाइज यू वुडंट, है ना. You can also find these equations using Heron's formula, but वहाँ पे क्या है? You will get this x in what degree? पहले s में होगा. You get it in the 4th degree. तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यूज आएंगे. समझ रहे हो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मैं जो बोल रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो ट्राई हेरन्स फॉर्मूला. व्हाट इज हेरन्स फॉर्मूला? एस निकालोगे पहले. यस, दैट इज यू आर गोना हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस. तो लंबा चौड़ा हो जाएगा. या ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ. एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकालना है. आई विल ड्रॉ द ट्राइंगल फॉर यू ऑल. इफ यू अटेंडेड माई ट्राइंगल्स का सेशन देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन लेस देन अ मिनट. ये ABC है, -1, 5, 3, 1, 5, 7. There are 3 midpoints they are saying. BC का midpoint is D, AB का midpoint is F, and AB का midpoint F है, AC का midpoint E है. Correct. Superb Milan, very nice. That is all that you need. इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करो. अगर सिमिलर है तो एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया इज 1/4 ऑफ बड़े वाले का एरिया. बस बड़े वाले का एरिया निकालो फटाफट एंड देन गो फॉर 1/4 ऑफ इट. जल्दी से करो. शुड नॉट टेक यू अ मिनट.
4 square units. Milan says 4. How about others? Baki? मिलन के हिसाब से आंसर 4 है. 4 square units. Anyone else? Vishal says 4. Beautiful Vishal, very good. तो क्या आ गया? Simple, that's it. You know that area of triangle DEF is going to be 1/4 of area of triangle ABC. श्रेयसी, नलन, ब्यूटिफुल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल ले. इज गोइंग टू बी व्हाट? हाफ ऑफ x1 into y2 minus y3, which is 1 minus 7 minus 6 plus x2, that is 3 into y3 minus y1, that is 7 minus 5, 2 plus x3, that is 5 into y1 minus y2, 1 minus of 1 minus 5 minus 4. इसका मॉड्यूलस है. हाँ, मॉड्यूलस. So this becomes what? Half of 6 plus 6 minus 20 का मॉड्यूलस. So this is 8. नहीं रुको, something's wrong here. क्या wrong है? -1 into 7 minus 1. y2 minus y3 करना है, बराबर. क्या मिस आउट हो गया कैलकुलेशन में? समथिंग्स मिस्ड आउट इन द कैलकुलेशन. -1 into 1 minus 7, 3 into 7 minus 5, and 5. Oh, 5 गलत है. Has to be x3, which is 5, बराबर 5 into 5 minus 1, 4 plus 20. Sorry. So this is half of 32, which is 16 square units. तो you found out area of triangle ABC. ये इश्यू कॉमन है गाइस. साइन का इश्यू जो है बहुत कॉमन है. प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस. ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज गोइंग टू बी 1/4 of 16, which is 4 square units. Another way of doing this is finding out these points. Yes, f क्या होगा? -1 plus 3/2. Yes, this is 2/2 is 1, comma 4. This is 1, 2. Yes, ऐसे करके आप तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो. 4/2 is 2, 12/2 is 6. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/2 is 4, 8/2 is 4. Are you understanding this, guys? यार आना समझ में? YouTube भाई क्या तकलीफ है? Guys, are you able to hear me? I hope you are able to hear me because मैं फ़ोन में YouTube में कुछ इश्यू है तो चैट नहीं देख पा रहा हूँ. Let's go for the next. They've given a quadrilateral. They want us to find out its area. चलो go ahead and try this. I'll try and figure out this chat का issue.
हाँ अभी आ रहा है. ओके I'm back, guys. Yeah. Milan says 25 square units. Anyone else? Any other answers? Area of this given quadrilateral. So what is area of any given quadrilateral? Half of x1 y1 x2 y2. ये कर लो अगर आपको कंफ्यूज होता है. If you easily get confused, then write this down. It'll make your job easier. x5 is nothing but x1. So x1 y1 again. Yes, इसका determinant निकालना आपको. That's it. So what will it be? Area will be equal to half of x1 y2. तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4. 15. Shreyashi says 15. Milan, are you not a part of that group? एक प्लस के लिए एक ग्रुप बना. आप मेरे को अलग से मैसेज करो. I'll add you to that group. ठीक है. Shreyashi says 15 square units. Others check करो. Okay. So half times. अगर ये भी कंफ्यूजिंग है तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स आल्सो. इवन बेटर. 1, 1, 3, 4, 5, -2. साइन को लेके बी केयरफुल. ओके. 5, -2, 4, -7 एंड 1, 1. इसका हाफ. नाउ इट बिकम्स इजी, राइट. 4 - 3 1 -6 -20 -26 -35 minus of -8 -35 plus 8, which is -27, and 4 plus 7 11. Sure, area is half times modulus. Again modulus लगेगा यहाँ पे. So this is going to be 53. Am I right? 53 minus 12 is going to be 41. Four minus 3 is 1. -6 minus 20 is -26. -35 plus 8 is -27. 4 minus of -7 is 11. बराबर तो है. Sure, Yatharth. See you at 8. Guys, एक बार चेक करो आपके कैलकुलेशंस. प्लीज चेक योर कैलकुलेशंस इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आंसर बराबर है. 41/2 -41 होगा उसका मॉडुलस. यस, मॉडुलस ऑफ -41 विच इज 41/2 और
20.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो 15 या 25 बोले हैं वो एक बार ही चेक कर लो, बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग। द राइट आंसर इज 20.5 यूनिट्स। या -8 कहाँ पे? ये वाला -8, ये माइनस ऑफ -8 है मिश्रा, माइनस ऑफ -8 है। सो दिस इज -35 माइनस ऑफ -8, -35 माइनस ऑफ -8 है, विच इज -35 + 8 जो कि -27। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल से तो कर रहा हूँ मैं। आई एम डूइंग इट बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ओनली, नो श्रेयसी? If this is confusing, then what you can do is you can go by area of the triangle also if you want. Yes, let's say if these are the 4 vertices A, B, C, D, then find out area of this triangle and find out area of this triangle and add them. But ये तो और भी लंबा है, this is even long, this is the best method. Done? है ना? Super. Yeah. Chalo. So today's agenda is done. Okay guys, price hike is real. Price hike is definitely real if you are not already on plus, जो कि I think almost everybody is here, है ना? मिलन, नलिन, श्रेयसी, अब तीनों हो प्लस पे। So if there's anyone who is watching this now or later जो प्लस पे नहीं है, 31st मार्च के बाद से the prices will be increased. These are the old prices, सारे सब्सक्रिप्शंस के, ये है नए prices। तो जो 12 मंथ का प्लस था 17,500 will now become 22,550। Yes, जो 21,000 का था 24 months का will now become 32,800. So the price hike होने के पहले, that is before the end of this month, if you want to take the subscription, you'd be most benefited. Yes, this is for plus, this is for iconic. To take the subscription, you use my referral code Surana Life. Yeah. श्रेयसी आप नहीं हो गया प्लस पे, तो फिर आ जाओ, किस चीज़ की देरी, आ जाओ जल्दी से फिर। या चलो अभी क्विज करेंगे। आर यू गाइज रेडी फॉर द क्विज? यस, ये सेकेंड क्विज है, वी हैव डन वन येस्टरडे। हाँ पूछो नलिन, व्हाट क्वेरी डू यू हैव? सच कहे तो नहीं, क्या बोल रहे हो मिलन? कुछ गड्डगोल है इधर, कुछ तो गड़बड़ है, सीन क्या है ब्रो? ओके, आई विल स्टार्ट द क्विज फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रेडी हो गया? I'll just do a small 10 question quiz, ज़्यादा नहीं, 80 seconds per question. Yes, I'll give you the ID. If there's someone here who has not done a quiz before, then go ahead, download the Unacademy's learning app and register yourself using your mobile number. Go to tests, go to quizzes, live quizzes में join quiz, and this is the ID 588032.
नलिन प्लस पे 10 AM to 12 PM होगा. अदर स्लॉट्स वेर नॉट अवेलेबल या उसमें कुछ ना कुछ इश्यू हो रहा था. 4 से 5 क्वेश्चन हो जाए बस है. मिलन एम बड़ा एम करो, लंबा सोचो. ज्वाइन कर लिया क्या आप लोगों ने गाइस? नलिन मिलन नॉट एबल टू ज्वाइन. क्यों, क्या हुआ? 588032 आपने ज्वाइन, आपका ज्वाइन हो गया नलिन. आई कैन सी योर फोटो देर. बाकी मिलन श्रेयसी जल्दी आ जाओ. वेरी गुड मिलन श्रेयसी. चलो स्टार्ट करें. So we know a little more than what we knew yesterday. Let's see if that makes a difference. We are still yet to touch equation of a line, parallel line, perpendicular line, slope, distance between parallel lines. वो सब करना बाकी है. Meanwhile, try this. Circumcentre. क्विक बहुत इजी क्वेश्चन है. Nice, great going, very good. Suchi, Nalin, no issues. Milan, okay. So different forms of lines भी बाकी है. इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब बाकी है. ट्राई करो जल्दी से. Hi Rashi. Rashi, are you talking about स्पेशल पे, प्रैक्टिस सेशन स्पेशल पे? क्या स्पेशल ऐप पे? We'll be starting from 1st of April. We'll be resuming those classes from 1st of April. Very good, Nalin, Suchi, Milan.
No issues, Shreyashi. Hello Rishabh. Hi Manish. YT YouTube पे क्या पूरा अरिथमेटिक का पूछ रहे हो आप? We'll be planning some practice sessions in April. The first week में we'll be doing some practice sessions. Don't worry. ठीक है? Equilateral triangle, guys. Good going. ट्राई करो, अगर ये हो रहा है, नहीं हो रहा है तो डोंट वरी. अगर इनमें से अपन जो भी कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन बेसिस पे अगर कुछ भी है तो यू कैन स्किप इट. ठीक है, बाकी के ट्राई करो. Good. Super Milan Nalin competition चल रहा. Very good Sochi. No issue Shreyashi. Okay, it is data sufficiency. पांच आंसर चॉइसेस हैं, हाँ ध्यान से. Data sufficiency they've stopped asking in CAT. There are a lot of questions, a lot of exams, a lot of tests that purely rely on data sufficiency. Like GMAT, a good chunk of questions are on DS.
अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बाकी है. There's a lot of things that we are still yet to do. Nice, Milan. Very good, Suchi. Okay, another one from circles. That pound sign is actually less than 10 less than a less than 20, 8 less than b less than 10. Okay. Three more to go. Abscissa is the x coordinate. Y coordinate is called the ordinate. They're not asking what is the value of p, they're asking how many values of p is possible. Okay. Okay. सबका गलत हुआ.
Basically 2 tangents are drawn now. Nice, Milan. All right, last question, guys. Another one on circles. This is on Plus. This is on YouTube. And tomorrow, what is tomorrow? 26th March. Superb. Milan, Nalin, Suchi and Shreyashi. Great job, guys. Very nice work. Very nice work. हवा ही नहीं लगी. Euro was a mistake. Instead of giving less than, they gave euro. So formatting mistake है basically. ओके तो ये सुन लो कल का प्लान. आज का प्लान सुन लो पहले. टुडे विल बी डूइंग एट 6 PM. जो भी प्लस पे है 6 PM विल बी डूइंग ज्योमेट्री पे प्रैक्टिस. यस, एंड डाउट क्लियरिंग सेशन. अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, वरना विल बी डूइंग ज्योमेट्री पे प्रैक्टिस एट 8 PM टुडे ऑन यूट्यूब. विल बी स्टार्टिंग विद नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर. विल बी डूइंग टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन बेसिकली. यस, tomorrow 26th March 3 PM पे we'll be doing the same session, coordinate geometry पे third lecture. 6 PM पे we'll be starting mensuration on plus, and 8 PM पे we'll be doing second lecture of number system. Yes, this is today and tomorrow का plan. हाँ, नलिन, मिलन, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो. I'll get yourselves added there. Yes, all these are upcoming sessions के plan. We'll be doing all these parallel lines, perpendicular lines tomorrow. Also, guys, if you are doing nothing on Sunday, no, please put this in your schedule. Sunday 12 PM आपका combat है. इस month का आखिरी combat है. So go ahead, use my referral code Surana or Surana Live and enroll to combat. If you are not confident also, no issues.
प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो प्लीज़ गेट योरसेल्व्स एडेड. या and this is also going on Monday to Saturday 7 p.m. to 7:30 p.m. 10 questions है every day and you get to win rewards. Yes, ये सिर्फ मार्च के लिए है, तो don't miss out this opportunity. Just 10 questions 30 minutes में you'll be able to get it. हाँ नलिन, Algebra start करेंगे next month. Yes, you can take the subscription if you haven't already. You pick up any one of these packages or 12 months and 24 months one. These are the best ones. Take them. Use my referral code Surana live. Get your 10% discount. Mind you guys, 31st March के बाद price increase हो रहा है. All prices will increase. Before that happens, go ahead and take the subscription. If you're looking for a personal mentor, personalized test results, पूरा report आपको चाहिए, क्या weak areas, strong areas, all of that, and go for Iconic, that 12 months and 24 months. Still you can use my referral code Surana live, get your 10% discount. Yes, there's also no cost EMI options available for both of these programs. Thank you very much for being a part of this session, guys. I'll see you all, some of you at 6 p.m. on Plus and most of you at 8 p.m. today with number system ka pehla lecture. Done. Thank you very much, guys. See you. Have a great day ahead. Keep learning and let's crack it.